Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे केरो किछि MCQs प्रैक्टिस करिबा. आपण ए PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि परिबे. क्वेश्चन नंबर 1, who was the India's first chairman of the planning commission? Which option is the right answer? प्लानिंग कमिशन रो प्रथम चेयरमैन किए थिले? प्लानिंग कमिशन रो प्रथम चेयरमैन किए थिले? ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू. मन रखंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्लानिंग कमिशन रो प्रथम चेयरमैन. ऑप्शन 1 is your right answer. Okay, next question. What is the total literacy rate of Odisha as per the census 2011? approximately केते परसेंटेज रही ओडिशा रो साक्षरता हार 2011 जनगणना अनुसार ओडिशा रो साक्षरता हार पाखापाखि 73%. ऑप्शन 1 is your right answer. Next, which of the following is equal to force? Force equal to कौन हिजबो कोंतु? Force equal to कौन हिजबो? F equal to ma. Newton's second law of motion. Mass into acceleration. Mass into acceleration is your right answer. Then force रो unit होची Newton. ठीक अछि. Next, Indus Water Treaty IWT is signed between which of the two countries? केउं दुईटी देश मध्यरे इंडस वाटर ट्रीटी को स्वाक्षरित करा जायतिला 1960 रे इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान एंड इंडिया. ऑप्शन 1 हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the headquarters of the World Bank situated? परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसुची. प्रश्न कोन कहूची? वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर. वर्ल्ड बैंक रो विश्व बैंक रो मुख्यालय केउठारे अछि? ट्राई करंतु. वाशिंगटन डीसी. ऑप्शन 1 which was the right answer. Washington is your right answer. Next question. Who among the following is the first recipient of the Nobel Prize in Peace from India? Peace from India. Peace शांति क्षेत्र रे प्रथम recipient किए थिले? Option 3 Mother Teresa is your right answer. Option 3 which was the right answer. Next. Article 123 of the Constitution of India deals with very important. Article 123 रे कोन वर्णना करा जायछि? Article 123 रे वर्णना करा जायछि ordinance making power of the president. Option 2 is your right answer. Ordinance making power of the president. Next question. Classical dance Mohiniyattam originally belongs to which of the following state? Mohiniyattam gotiye classical dance अटे belongs to Kerala is your right answer. Kerala is your right answer. मन रखंतु. Next, who invented blood groups? Blood group को किए invent करथिले? Who invented blood groups? Carl Landsteiner. Option 3 Carl Landsteiner is your right answer. Next question. Which of the following cities never organized an Olympic Games? क्यों शहर रे Olympic Games होई नाही? New Delhi. New Delhi is your right answer. Option 4 is your right answer. Next. Which of the following is a mammal? Mammal क्यों था हिजबो? Whale हिजबो. Blue whale गोटे mammal अटे. Option 2 is your right answer. Next. Contribution to which field is honored by Dada Saheb Phalke Award? क्यों क्षेत्र रे सम्मानित करा जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा? अर्थात दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों क्षेत्र रे प्रदान करा जाए? क्यों क्षेत्र रे? That is films, cinema, चलचित्र क्षेत्र रे यह प्रदान करा जाए. Next. Which is the outermost layer of the atmosphere? Try करंतु. Atmosphere रो outermost layer निम्नक्त मध्यरु केउटा? Atmosphere रो outermost layer निम्नक्त मध्यरु केउटा हिजिबो? Exosphere होइजिबो. Option 3 exosphere is your right answer. Next question.
Which famous Sanskrit poet wrote Gita Govinda? କୁହନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜୟଦେବ. Jaydev is our right answer. Next question. Who is the Competition Commission of India? Competition Commission of India किए अटंती? Competition Commission of India होचंती रवनीत कौर. Option 1 रवनीत कौर is your right answer. मन रखंतु. Next question. Mount Herit National Park is situated in which of the following states or union territories? Mount Herit National Park केउंठारे अवस्थित अटे? Mount Herit National Park is located in Andaman and Nicobar is your right answer. Option D is your right answer. Next question. The Chilika Lake is situated in which of the following states? केउ राज्य रे चिलिका लेक हृद रहिछि? चिलिका लेक रहिछि आम राज्य ओडिशा. ओडिशा होइजबो एहरो राइट आंसर. ठीक अछि. Next. What is the minimum age for voting in India? Minimum age केते? प्रथमे 21 थिला बट वर्तमान केते अछि? 18 years. 18 years is your right answer. 18 years परे जने eligible हबो for voting. Next. Which of the following is the full form of UNHRC? UNHRC गोटे ऑर्गेनाइजेशन. यार फुल फॉर्म कोन हबो कोन? UNHRC रो फुल फॉर्म हेउची United Nations Human Rights Council. Option 1 is your right answer. मन रखिबा. Next. Which of these organization release the annual corruption perception index ranking of countries by their perceived levels of corruption? अर्थात corruption perception index रो जो ranking को क्यों organization क्यों अनुष्ठान द्वारा प्रकाश करा जाए? क्लियर? CPIR corruption perception index को क्यों organization द्वारा प्रकाश करा जाए? Which option है जिवो? Transparency International. Option 3 Transparency International is your right answer. Next. In which of the following states the Haravati project is located? कुहंतु Haravati project केउ राज्य रे अवस्थित अटे? Haravati project is located in Gujarat. Option D is the right answer. Okay. Haravati Gujarat मन रखिबा. Next. Which among the following activities consumes largest amount of fresh water? Fresh water को अधिक consume होची केउ activity रे? Agricultural activity रे. Option 4 agricultural activity is your right answer. Next. In which year an European came to India for first time through sea route जरिया रे? European माने प्रथमे sea route जरिया रे भारत को प्रवेश करथिले ता थिला 1498. किए आस्तिले? वास्को दा गामा. ठीक अछि. प्रथमे पोर्तुगीज आस्तिले वास्को दा गामा आसी केउठारे पहुंचथिले? कालीकट ठारे पहुंचथिले. ओके. So 1498 is your right answer. Next. Who was the founder of Pala dynasty? Pala dynasty रो प्रतिष्ठाता किए अटंती? Pala dynasty रो प्रतिष्ठाता होचंती गोपाल. Option 2 गोपाल होइजबो यार right answer. Next. What is the full form for AFSPA that has been in news recently? Okay. Simply मते कहंतु AFSPA रो full form कोन है? AFSPA रो full form हेउची Armed Force Special Powers Act. Option 1 Armed Force Special Powers Act is your right answer. Next. Which of the following has the power to transfer any civil case anywhere in India? Which of the following has the power? एही power टी कहा निकटरे अछि? Supreme Court निकटरे रहिछि. Option 4 Supreme Court is your right answer. Next. Who among the following wrote The White Tiger? Okay. The White Tiger को निम्नोक्त मध्यरु कहा द्वारा लिखा जाइछि?
ए टाइगर रो लेखक होउचंती अरविंद अरविंद अडिगा अरविंद अडिगा इज योर राइट आंसर मन रखंतु नेक्स्ट who among the following is the current national security advisor कि अटंती current national security advisor ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ऑप्शन 2 ଅଜିତ ଡୋଭାଲ is your right answer next the magnitude of an earthquake is measured by which of the following earthquake रो जो magnitude को measure करा जाउची रिक्टर स्केल रे ऑप्शन 1 रिक्टर स्केल is your right answer next भितरकनिका नेशनल पार्क is situated in which state केउ राज्य रे भितरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित भितरकनिका नेशनल पार्क रहिछि ओडिसा रे ऑप्शन 4 ओडिशा is your right answer next name the present capital city of Qatar रो capital city होछि राजधानी होछि दोहा ऑप्शन 3 is your right answer next which is the longest national highway in India भारतर longest दीर्घतम जातीय राजपथ होछि NH44 option 4 is your right answer next which British Governor General was associated with abolition of sati practice sati प्रथा को निम्नोक्त मध्यरु केउ ब्रिटिश गवर्नर जनरल एहाकु उच्छेद करथिले सती प्रथा को केउ ब्रिटिश गवर्नर जनरल एहाकु उच्छेद करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन 1 is your right answer मन रखंतु next in stock markets what is meant by dematerialization of security जेमिति आपण डीमैट अकाउंट खोलंती ठीक अछि वर्तमान आपण पेपर परचेस करिया पई पड़े नै डिजिटलाइज दैट इज डीमैट अकाउंट रे स्टॉक मार्केट ऊपर आपण अकाउंट खोली पारंती देन व्हाट इज मेंट बाय dematerialization of securities means electronic holding of the shares replacing the paper certificates option 2 is your right answer next in which of the following present day country is the oldest civilization of the world Mesopotamia civilization situated Mesopotamia civilization देखिबा पई पाइबा that is Iraq country रे option 3 Iraq country is your right answer in which year the Reserve Bank of India was established very important RBI को केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा जायतिला RBI को प्रतिष्ठा करा जायतिला 1935 रे 1935 मसिया ई मसियाटी को मन रखंतु where is the headquarter of the World Trade Organization located WTO रो हेडक्वार्टर रहिछि आपनकर जेनेवा स्विट्जरलैंड रो जेनेवा ठारे ऑप्शन 2 is your right answer संगीत नाटक एकेडमी the apex body in the field of performing arts in the country was set up in संगीत नाटक एकेडमी होची गोटे एपेक्स बॉडी माने सर्वोच्च बॉडी अटे ठीक अछि एटा आर्ट क्षेत्र रे एवं एहाकु प्रतिष्ठा करा जायतिला 1953 रे ऑप्शन 2 हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट Yangon Stock Exchange is situated in which of the following country Yangon Stock Exchange YSE that is situated in Myanmar Myanmar is the right answer Myanmar country next question which of the following elements is a non metal निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक नॉन मेटल अटे ट्राई करंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक नॉन मेटल होइजबो केउटा क्लोरीन ऑप्शन 2 is your right answer chlorine is your right answer next which authority conducts elections to corporations municipalities and other local bodies in a state ये conduct करंती election को the state election commission the state election commissions your right answer okay choose करछंती समस्ते देखंतु next question in which year was the atom bomb dropped on Hiroshima in Japan जापान रो जो हिरोशिमा रहिछि एटम बम को सेठारे पक्का जायतिला केउ मसिया रे 1945 मसिया
1945 मसीहा हो राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्जातीय महिला दिवस भाव पालन करा जाउची मार्च 8 तारिख। ऑप्शन 2 मार्च 8 तारिख हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is the first Indian recipient of the main Booker Prize, प्रथम भारतीय थिले, प्रथम भारतीय जे कि रिसिपिएंट थिले मेन बुकर प्राइज, अरुंधति रॉय। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, अरुंधति रॉय इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हम देखिया पई पारे भूटान रे, ठीक अछि। ऑप्शन 3 is your right answer. Next, who was the emperor of the Mughal Empire in India when British East India Company established its first factory in India? ठीक अछि, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जेतेबेले तार फैक्ट्री स्थापन करथिला सेतेबेले मुगल शासक किए थिले, मुगल शासक थिले जहांगीर। ऑप्शन 4 is your right answer. ओके, एवं सेमानकर जो परमानेंट कंपनीटा फैक्ट्रीटा केउं थारे सेमाने स्थापन करथिले, सूरत थारे, मन रखंतु ब्रिटिश मानकर परीक्षा रे प्रश्न रहउछि। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज और वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज जल साथी मिशन। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ अगेंस्ट व्हाट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करेबो यूवी रे को, यूवी रे कबळरू अर्थ को प्रोटेक्ट करेबो, अल्ट्रा वायलेट रेस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून कथा को जाउची एशिया रो ओडिसा रे रहिछि। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डीएनए स्टैंड फॉर कोन, डीएनए हम बॉडी रो ब्लूप्रिंट होची डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन 1 is your right answer. Next question, who among the following was the first European to come to India through sea route? जरिए किए आस्तिले, वास्को डा गामा ही आस्तिले, पोर्तुगीज वास्को डा गामा। ओके, वास्को डा गामा। नेक्स्ट, which among the following is the highest peak of Odisha, ओडिसा रो हाईएस्ट पीक होची देवमाली, located in कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन 4 is your right answer. Who among the following is on the 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार, 69तम ज्ञानपीठ पुरस्कार को किए जीतिछंती, विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन 2 विनोद कुमार शुक्ला इज योर राइट आंसर। Who were the first Europeans to enter in Odisha, प्रथम यूरोपियंस थिले पोर्तुगीज माने, पोर्तुगीज माने थिले प्रथम यूरोपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Guru Nanak, the founder of Sikhism, was contemporary of which of the following Mughal king? Guru Nanak थिले बाबर, से समय रे बाबर शासन करथिले। ऑप्शन 4 is the right answer. Next, who among the following is the founder of e-commerce company Flipkart रो फाउंडर के अटंती, सचिन बंसल। ऑप्शन 2 is your right answer. 2026 एशियन गेम्स will be held in जापान रे हबो, 2026 रो एशियन गेम्स जापान रे हेबो। नेक्स्ट, Siang हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केउ राज्य रे रहिछि, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश इज योर राइट आंसर। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ कोन, आर्टिकल 14 रे कोन वर्णना करा जायछि, राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, which of the following is the last 5-year plans of India, 12टी 5-year plan थिला, तो 12तम 5-year plan टा ही थिला कोन लास्ट 5-year plan, देन एटा नीति आयोग रे रिप्लेस होई गला। वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ अक्टोबर मासरे वाइल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व करा जाए। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक अछि।
विश्वर सृष्टिटा केमिति दैट इज बिग बैंग थ्योरी रे एक्सप्लेन करा जाइछि. नेक्स्ट, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो वर्तमान चेयरमैन के अटंती? ही रामा सुब्रमण्यम. ही रामा सुब्रमण्यम. ऑप्शन 1 is your right answer. Which of the following state has the largest forest cover in India? That is Madhya Pradesh. Option 4 Madhya Pradesh is your right answer. Next, who among the following wrote Ananda Math? Ananda Math को किए लिखिथिले? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मन रखंतु. Who was the prime minister of who was the first prime minister of India? प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru. Option 2 is your right answer. What is the full form of SARS? SARS रो full form कौन है? SARS रो full form है Severe Acute Respiratory Syndrome. Option 1 is your right answer. Severe Acute Respiratory Syndrome. Next, who among the following used to give the final approval to the 5-year plans of India? Final approvals ये प्रदान करे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी द्वारा एटा को कौन करा जाए फाइनल अप्रूवल प्रदान करा जाए 5-year प्लान को किंतु वर्तमान तो नीति आयोग अछि. In which year the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA was established? क्यों मसिया प्रतिष्ठा करा जाइतला 1999. Option 3 हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, in which country is the headquarter of the International Labour Organization? ILO रो हेडक्वार्टर केउठारे अवस्थित? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर रहिछि स्विट्जरलैंड. ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड इज योर राइट आंसर. Which among the following planets in the solar system is farthest from the sun ru बहुत दूर रहिछि? Neptune. Option 3 Neptune is your right answer. Next, which is known as the coal capital of India? भारतर कोल कैपिटल हेउछि धनबाद. ऑप्शन 3 धनबाद इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज योर राइट आंसर. ऑप्शन 1 द प्रेसिडेंट हवर राइट आंसर. प्राइमरी रीजन फॉर लूनार इक्लिप्स इज कौन? लूनार इक्लिप्स रो प्राथमिक बा गोटे रीजन कौन है परिबो काहे कि हुए एटा? बिकॉज़ the earth comes between moon and sun. The earth comes between moon and sun. Option 1 is your right answer. Next, which of the following finance minister has presented maximum number of budget in India? केतिले? Moraji Desai. Option 3 is your right answer. Moraji Desai. ISRO stand for कौन हिजो बोलतो? ISRO. ISRO रो full form हेउची Indian Space Research Organization. Option 3 Indian Space Research Organization is your right answer. Which of the following is the currency of European Union? कहंतु यूरोपियन यूनियन रो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक करेंसी अटे? यूरोपियन यूनियन रो करेंसी होची यूरो. कोन हिजबो? ऑप्शन 2 यूरो इज योर राइट आंसर. मन रखंतु. नेक्स्ट, who among the following is the current union railway minister? वर्तमान रो केंद्र रेलवे मंत्री की अटंती? अश्विनी वैष्णव. रेलवे मंत्री होचंती अश्विनी वैष्णव इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, the Indian constitution was adopted by the constituent assembly on which day? केउ दिन याकू एडॉप्ट करा जायतिला? 26 नवंबर 1949 मसिया रे. ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर. Who wrote the famous book with the people? With the people प्रसिद्ध पुस्तक को किए लिखिथिले? नानी पलखीवाला. ऑप्शन 1 नानी पलखीवाला इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, India's first iron and steel factory is located in which of the following cities? That is Jamshedpur. Option 4 Jamshedpur is your right answer. World Environment Day is observed on which day? World Environment Day को पालन करा जाए
जून मास 5 तारिख को 5th जून हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? केउ क्षेत्र रे अर्जुन पुरस्कार प्रदान करा जाए? स्पोर्ट्स क्रीडा क्षेत्र रे अर्जुन पुरस्कार को प्रदान करा जाए। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड द Haladan multimodal transport project with which of the following country? केउं देश सहित? भारत एंड म्यांमार मध्य भारत एंड म्यांमार मध्य कालादान मल्टीमोडाल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को स्वाक्षरित करा जायतिला। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक रो प्रतिष्ठाता हेउचंती मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मार्क जुकरबर्ग इज योर राइट आंसर। Bokaro Steel Plant of SAIL is located which state? That is located in Jharkhand is your right answer. Option 4 is your right answer. Which of the following is considered as the oldest civilization of the world? World ro oldest civilization विषय जदि कथा हवा मेसोपोटामिया civilization. Option 2 मेसोपोटामिया civilization is your right answer. Next, बारका वैली इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केउ राज्य रे बारका वैली आपण देखिया पई पाइबे? बारका वैली इज सिचुएटेड इन असम इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 4 असम होई जबो यार राइट आंसर मन रखंतु। इन व्हिच ईयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पास्ड? ह्यूमन राइट को पास करा दितला दैट इज 1948 रे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, who is the present attorney general of India? Present attorney general of India होचंती आर वेंकट रमणी। ऑप्शन 3 is your right answer. Next, छौ dance commonly belongs to which of the following state? छौ नृत्य बिलोंग करूची छौटा होची वेस्ट बेंगल। वेस्ट बेंगल रो एक लोक नृत्य अटे। नेक्स्ट, when was the first 5 year plan introduced in India? प्रथम पंचवार्षिक योजना को 1951 मसिया रे इंट्रोड्यूस कराला। नेक्स्ट, who among the following was named as जिंदा पीर और लिविंग सेंट ऑफ मुगल पीरियड रे के थिले? औरंगजेब। ऑप्शन 2 औरंगजेब इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is calculated on the basis of the location of which Indian town? That is मिर्जापुर। मिर्जापुर लोकेशन को नेकी IST को कैलकुलेट करा जाए। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ आर्टिकल 44 रे वर्णना करा जायछि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी मन रखंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड द सन टेंपल ऑफ कोणार्क बिकम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? केउ मसिया रे कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो अंतर्भुक्त हला? 1984 मसिया। ऑप्शन 4 1984 मसिया मन रखिबा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर? जेतेबेला हम एटमॉस्फेयर ऊपर को जिबा कोन हबो? बोथ टेंपरेचर एंड प्रेशर डिक्रीज हो। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक एसिड हबो? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक एसिड हे जिवो? एक्वा रेजिया हेउचे एक एसिड। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केउ राज्य रे बिहू को सेलिब्रेट करा जाउची फेस्टिवल? आसाम। आसाम इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्स ऊपर स्टडी करिबा कोन कहजिबो? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन 1 is your right answer. Cosmology of right answer. Next, what is the full form of UNEP? Try करिबा। UNEP रो full form कोन हिजबो कहंतु? UNEP रो full form हेउची United Nations Environment Program. Option 4 is your right answer. Next, who is the only player in the world to win world titles in all formats of both billiards and snooker? Very very important. Billiards and snooker उभय क्षेत्र रे जी की
वर्ल्ड टाइटल को से होचंती पंकज आडवाणी मन रखंतु। ऑप्शन 3 पंकज आडवाणी इज योर राइट आंसर। Under which article of the Constitution is the President rule promulgated on any state in India? राष्ट्रपति शासन जारी करा जाय परिबो आर्टिकल 356। ऑप्शन 1 is your right answer. Next question. In which of the following present day states of India did चिपको मूवमेंट स्टार्ट? चिपको मूवमेंट आपनकर उत्तराखंड रे हितला, ठीक अछि। गच्छ पई एही आंदोलनटी होइतिला चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट, which of the following determines the quality of gasoline sample? gasoline sample रो क्वालिटी को निम्नलिखित मध्यरु केउंटा स्थिर करिवो? एथिबा ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जरिया रे स्थिर करा जाय परिबो। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। Who served as the first president of India? प्रथम राष्ट्रपति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक दास कैपिटल वाज रिटन बाय? दास कैपिटल एही बहीटी को के लिखिथिले? दास कैपिटल रो लेखक हेउचंती कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इन एक्रोनॉमी ब्रिक्स रे आई स्टैंड्स फॉर कोन हिजो? BRICS रे आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। इंडिया इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर। Where is the Orang National Park situated? Orang National Park केउठारे रहिछि? Orang National Park रहिछि आसाम रे। Option 2 Assam is your right answer. What is the capital of Afghanistan? Afghanistan रो राजधानी होछि काबुल। काबुल is your right answer. Option A काबुल हबो मने रखंतु। Which of the following continents has most number of countries in the world? अधिक देश आपण केउ महादेश रे देखिया पई पाइबे? इज अफ्रीका। ऑप्शन 1 अफ्रीका इज योर राइट आंसर ऑप्शन अनुसार। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट डज महात्मा गांधी पीस प्राइज कैरीज? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार रे तार जो पुरस्कार राशिटा केते रहिछि? एथिरे 1 करोड़ रो पुरस्कार राशि दिया जाय। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस को पालन करा जाए 21 फेब्रुआरी। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तोमार रूलर वाज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड दिल्ली? केतिले? अनंगपाल 2। ऑप्शन 1 अनंगपाल 2 इज योर राइट आंसर। Next question, who is the author of A Horse Walk into a Bar for which the Man Booker International Prize was awarded? Simply मते कहंतु A Horse Walks into a Bar यार ऑथर के अटंती जहा पई से मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज रे पुरस्कृत होइथिले। से होचंती डेविड ग्रॉसमैन। डेविड ग्रॉसमैन इज योर राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। Which of the following countries is the second largest producer of rice after China? China परे आम देश भारत। भारत second largest producer अटे rice क्षेत्र रे। Next, where did Gautam Buddha attain his enlightenment? कोनठारे? बोध गया ठारे। Option 1 बोध गया is your right answer. Next, who among the following is the chief of the naval staff इंडिया? नेवल स्टाफ रो चीफ के अटंती? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन 4 मन रखंतु एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बैंकर्स ऑफ बैंकर को आजे? काकू? आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंकर को आजे। ये डायरेक्ट प्रश्न रहउछि देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु। क्वेश्चन नंबर 120, इन व्हिच फील्ड डिड द इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी win the Nobel Prize 3 times? रेड क्रॉस कमिटी 3 थर नोबेल पुरस्कार को जीतीछि। सेटा रहउछि आपनकर पीस क्षेत्र रे। ऑप्शन 1 पीस क्षेत्र रे होइबो राइट आंसर। Which of the following source of energy does not have any problem of pollution in our environment रे? That is होउछि sun, solar,
energy is your right answer. Next question. Who among the following is the current CEO of Google? Google ro current CEO होचंती Sundar Pichai. Option 3, Sundar Pichai is your right answer. Next. Who gave the theory of relativity? Theory of relativity को किए प्रदान करथिले? Albert Einstein प्रदान करथिले. Option 3 is your right answer. Which of the following modern day country was the source of the blue gem storm lapis lazuli for the people of Horpan culture? Currently that is Afghanistan. Option 1, Afghanistan is your right answer. Next. Arthashastra written by Kautilya comprised of how many adhikarans or book? अर्थशास्त्र को कौटिल्य द्वारा रचना करा जायतिला एथिरे केतोटी गवा आमे कहि परिया जो अधिकरणस थिला 15 टी. ऑप्शन 4 15 टी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. इन व्हिच ईयर डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत रो तृतीय युद्ध होइतिला 1761 रे. केउ मसिया रे? ऑप्शन 1 1761 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. The Sabarmati river originates in which among the following state? एठारे प्रश्न पचरा जाइछि साबरमती नदी रो उत्पत्ति विषय. Which among the following state रो उत्पत्ति होइछि? राजस्थान. Option 1 Rajasthan is your right answer. Next. Who was the founder of Maurya dynasty? कोंतु मौर्य डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता किए थिले? मौर्य डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता होजंदी चंद्रगुप्त मौर्य. Option 4 is your right answer. First India Africa Army Chiefs Conclave was held in प्रथम इंडिया आफ्रिका रो जो आर्मी चीफ्स मानकर कॉन्क्लेव सम्मेलन होइतिला पुणे ठारे होइतिला मन रखंतु. ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम इन 1957? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? क्यों ऑर्गेनाइजेशन? International Atomic Energy Agency. Option 1 is your right answer. Next. Who among the following is the last deputy chairman of the planning commission? Last deputy chairman किए थिले? Montek Singh Ahluwalia. Montek Singh Ahluwalia is your right answer. Okay. Montek Singh को ए नाटी को मन रखंतु. Next. As on January 2025, who is the governor of Odisha? तो एटा करेंटली जदि हमें देखिबा जनवरी कथा छाडंतु दैट इज करेंटली देखंतु माने वर्तमान ओडिसा रो गवर्नर की अटंती. वर्तमान ओडिसा रो गवर्नर की अटंती हरिबाबू काम्बामपति. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चापचारकूट इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? चापचारकूट फेस्टिवल को पालन करा जाए मिजोरम रे. ऑप्शन 1 मिजोरम इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. Article 17 of the Constitution of India deals with Article 17 रे कोन वर्णना करा जायछि? Untouchability, abolition of untouchability. Article 17 untouchability मन रखिबा. Next. In which year was the Indian National Congress formed? केउ मसिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस को गठन करा जायतिला? 1885 मसिया रे. 1885 मसिया होइबो राइट आंसर. Where is India's largest shipyard situated? भारतर लार्जेस्ट shipyard केउ ठारे रहिछि? केउ ठारे? कोची ठारे. केरल रो कोची इज योर राइट आंसर. समस्त ऑप्शन 1 चूज करछंती. नेक्स्ट. Campbell Bay National Park. Campbell Bay National Park is situated in which of the following state or union territory? That is located in Andaman and Nicobar. Option 3 have here right answer. Next. Which of the 5-year plan follow the Mahalanobis model of growth? Mahalanobis model of growth second 5-year plan थिला जो थरे कोन हेवी इंडस्ट्री ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जायतिला. नेक्स्ट. In which of the following countries did the first communist revolution take place? first communist revolution होइतिला केउ कंट्री? रूसिया रे. रूसिया हो जो राइट आंसर. ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा. इन व्हिच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? आरबीआई रो हेडक्वार्टर केउठारे रहिछि कोंतु? आरबीआई रो हेडक्वार्टर रहिछि मुंबई ठारे.
Option 1, Mumbai is your right answer. Next, what is the full form of IRDAI? IRDAI ର full form କଣ ହେଇଯିବ? ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହୁଛି, ଟ୍ରାଇ କରନ୍ତୁ। IRDAI ର full form ହେଉଛି Insurance Regulatory and Development Authority of India. Option 2 is your right answer. Next, January 9 is celebrated as which of the following day every year? 9th January को celebrate करा जाए कौन? NRI Day भाବରେ. Option 2, NRI Day is your right answer. Next question. Economic planning in India is included in which list under the Constitution of India? Economic planning टा आसीबो आपनकर concurrent list. Option 3, concurrent list is your right answer. Which of the following gas is the main constituent of biogas? Biogas रो मुख्य constituent होची methane and carbon dioxide. Methane and carbon dioxide. Next question. The Jagannath Temple of Odisha was built by which of the following king? क्यों राजा जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करथिले? अनंत वर्मन, चोडगंगा, देव होइजिबो यार right answer. Next. Who is the chairman of Niti Aayog as of January 2025? नीति आयोग रो चेयरमैन किए? नीति आयोग रो चेयरमैन होचंती नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी होचंती यार चेयरमैन, माने जे प्राइम मिनिस्टर रहबो भारत रो से होचंती नीति आयोग रो चेयरमैन. Who among the following is the author of the book named the God of Small Things? The God of Small Things रो लेखक किए अटंती? The God of Small Things रो लेखक होचंती अरुंधति रॉय. Option 4, Arundhati Roy is your right answer. Which of the following lines separated Arunachal Pradesh from Tibet during British rule? Which of the following lines separated Arunachal Pradesh from Tibet? Arunachal Pradesh and Tibet मध्यरे British rule समय जो लाइन रेखाटन देखला ताहा थिला McMahon line. McMahon line. Option 3 is your right answer. Next. An annual event Earth Day is celebrated on which of the following day? Earth Day को celebrate करा जाए अप्रैल मास 24 तारीख दिन. Option 4 is your right answer. Number 150. Asian Development Bank has its headquarter at which of the following city? Asian Development Bank रो headquarter रहिछि मनीला ठारे. फिलीपींस रो मनीला हिजबो right answer. तो यह थिला आपनकर important 150 MCQ out of 150 आपण केतोटी प्रश्न करि परिछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबे. आपण ए पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करि परिबे. क्लास टी को लाइक करंतु एंड शेयर करंतु. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस.